Morning students, today we discuss about tuples in Python. As we know that tuple is also a data type, and in our previous class we discussed about the list data types. As we know that data types tells the type of value a variable hold and the kind of operations performed on them. Today we discuss about tuples. Tuples are very much similar to lists except that they are immutable. They cannot be changed. A tuple is a collection of Python objects separated by commas. In other words, a tuple is a sequence of immutable Python objects. They are created using parentheses rather than square brackets. The difference between list and tuple is that the contents of the tuples cannot be changed, which we have discussed in a previous class also. Tuples are represented by parentheses, whereas lists use square brackets. Now, creating a tuple. There are various methods for creating a tuple. A tuple is created by placing all the elements inside a parenthesis separated by a comma. See the example, parenthesis 1, 2, 3. You can create tuple in this way also. Second is the parentheses are optional, but it is a good practice to write it. Why? To make a program, to make more readable, to identify tuple we use parentheses. Next method is a tuple can have any number of items and they may be of different types: integer, float, list, string, etc. Suppose we have created a tuple containing elements 1, hello, 3.4. Here 1 is an integer value, hello is a string value, and 3.4 is a float value. So we can also say that tuple is a collection of different types of elements of different types of data types. You can create tuple by using a tuple constructor. Now, creating a tuple with one element is bit tricky. Suppose if we want to create a tuple containing a single element. So here we are creating tuples containing multiple elements. So first if suppose we want to create an empty tuple. टपल क्रिएट करने में जस्ट राइट नेम और टपल का हमने नाम लिखा इक्वल्स टू पैरेंथेसिस से माई अंडरस्कोर टपल इक्वल्स टू पैरेंथेसिस. जब हमने इसे रन कराया एम्प्टी टपल क्रिएट हो गया. अब टपल हैविंग इंटीजर, सपोज वी वांट टू क्रिएट अ टपल कंटेनिंग ओनली इंटीजर टाइप ऑफ एलिमेंट्स. टपल का नाम लिया हमने माई अंडरस्कोर टपल इक्वल्स टू पैरेंथेसिस 1, 2, 3 पैरेंथेसिस क्लोज. जब हमने इसे प्रिंट कराया टपल आ गया विच कंटेन ओनली इंटीजर वैल्यूज. नेक्स्ट हमने टपल क्रिएट किया है कंटेनिंग then we are creating a tuple containing mixed data elements of different data types. Suppose we have created taken a tuple my underscore tuple equals to 1, hello, 3.4. तो इसमें 1 हमारा इंटीजर टाइप का है, 3.4 हमारा फ्लोट वैल्यू है एंड hello is a string value. ऐसे ही we can create a nested tuple. A nested tuple means a tuple कंटेनिंग अ टपल मीन्स टपल के अंदर टपल हम क्रिएट करें तो उसे हमने बोल दिया नेस्टेड टपल. एंड टपल्स कैन बी क्रिएटेड विदाउट पैरेंथेसिस. दे आर आल्सो कॉल्ड टपल पैकिंग. इसके लिए हम क्रिएट कर सकते हैं माई अंडरस्कोर टपल इक्वल्स टू 3, 4.6, डॉग. जब हमने इसे रन कराया हमारे पास ये आउटपुट आ गया. तो जब आप टपल को क्रिएट करते हो विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैकिंग. क्रिएटिंग अ टपल विद अ सिंगल एलिमेंट इज अ बिट ट्रिकी. हैविंग वन एलिमेंट विद इन पैरेंथेसिस इज नॉट इनफ. We will need a trailing comma to indicate that it is a tuple. सिंपली हमने एक टपल क्रिएट किया एक सिंगल एलिमेंट से हेलो. तो हमने जब इसे रन कराया तो हमारे पास आंसर आ गया str मीन्स इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ स्ट्रिंग टाइप.
ठीक है, उसने वैल्यू असाइन कर दिया, उसको टपल क्रिएट नहीं किया है. व्हेन वी राइट माई अंडरस्कोर टपल इक्वल्स टू हेलो कॉमा, तो जब हमने इसे रन कराया तो इसने हमें बताया कि इसका क्लास क्या है, टपल है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ टपल. सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट अ tuple having a single element. Next, accessing elements in a tuple. You can access the values in the tuple with the index just as you did with the list. Nested tuples are accessed using nested indexing. Negative indexing can be applied to tuples similar to list. We can access a range of items in a tuple by using the slicing operator. Trying to reassign a value in tuple causes a type error. And different types of operations, different types of tuple functions are CMP, which we use to compare two tuples. Len is used to find the length of the tuple. Max returns the maximum value in the tuple. Min returns the minimum value from the tuple, and tuple function convert a list into a tuple. So these are the methods or the functions of a tuple. So this is all about the tuple. Thank you.